Hello friends, I am Parvinderrandhawaguru. You are watching my YouTube channel. Please like, comment, share, subscribe and hit super thanks button. That's an appreciation from your side. ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ. ये वीडियो मेरी लिसनिंग की है जिसकी शीट आपके सामने है. मैंने ये बुक जो ली है दैट इज़ फ्रॉम कैम्ब्रिज 16 टेस्ट 2 है. क्वेश्चंस मैंने सिर्फ सेलेक्ट किए हैं डैट इज़ फ्रॉम 1 to 10 ओनली. मतलब पार्ट 1 हमने करना है सिर्फ कैम्ब्रिज 16 में. राइट, तो वी विल डू दिस वन दैट इज़ क्वेश्चंस 1 to 10. और एक चीज़ आप फिर नोट कर लो, कंप्लीट द नोट्स बिलो. राइट वन वर्ड और ए नंबर एंड और ए नंबर. एक वर्ड या नंबर, एक वर्ड और ए नंबर. ठीक है, ये याद रखना आपने. कॉपिंग फोटोज टू डिजिटल फॉर्मेट. टाइम मिलेगा आपको, आपने अंडरलाइन कर लेना. रिक्वायरमेंट्स हम लोग ट्राई करते हैं, अगर हमारे से यहीं पे अंडरलाइन होता है. लेट मी एडजस्ट द थिंग्स. ठीक है डियर, वेट. A company that converts old photographs to your answers to the is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a company that converts old photographs to digital format. First, you have some time to look at questions 1 to 3. तो ये हमने अंडरलाइन कर लिया है. जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होएगा 1 to 3 तक अभी तक अंडरलाइन किया है. And answer questions 1 to 3. Hello, Picture Rep. Can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Sure. What would you like to know? Well, I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Some of them must be 50 or 60 years old, and I'd like to get them converted to digital format. Sure, we can do that for you. Right. And what about size? The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimetres, and each picture must be at least 4 centimetres. That's the minimum we can cope with. Well, that should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. We can't copy them otherwise. And also the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. Okay, that's not a problem. So, can you give me an idea of how much this will cost? I've got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service. Okay, and does that include the disc? Yes, one disc. But you can get extra ones for £5 each. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is. And once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10.
Is there anything else you'd like to ask about our services? Yes, I've roughly sorted out the photos into groups according to what they're about. So, can you keep them in those groups when you copy them? Sure, we'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. So, I could have one called Grandparents, for instance. Exactly. And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? Yes, in the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit or improve the contrast. That can make a big difference. Okay, and some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they? No, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. We do realise how precious these old photos can be. Sure. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, we can do that. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Any other information I can give you? How long will it all take? Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Any other information I can give you? How long will it all take? We aim to get the copying done in 10 days. Fine. Right, well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. We've found that plastic ones sometimes break in the post. Okay. Right, thanks for your help. Bye. Bye. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. So that's all about this part 1. So the thing is that what we did here, the person, first of all, there are two persons. This everybody knows. One is male, second is female. And the person, the lady talked about the frame, but the man, राइट इसने टॉक नहीं की फ्रेम के बारे में, इसने सिर्फ टॉक की भी उसमें नहीं होनी चाहिए और एल्बम नहीं होनी चाहिए. तो हमें इसका मतलब दोनों पे कंसंट्रेशन बना के रखनी है. ये हमारा फर्स्ट था. देखो पहले उन्होंने साइज़ की बात की, ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरी कुछ आई थिंक फ्रेम में होनी चाहिए, और उसने कहा कि उसमें बाहर मतलब एल्बम में नहीं होनी चाहिए, फ्रेम में नहीं होनी चाहिए. चलो ये फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ से. और ये डायरेक्ट आंसर था जो मेल के माउथ से ही क्लियर हो गया, राइट. और इसके बाद ये था जो कंप्लीट, उसने कहा कि जब पेमेंट रिसीव होएगी तो हम उसको फाइनल ऑर्डर को भेजेंगे, पहले हमारा नहीं होएगा कंप्लीटेड ऑर्डर को, ठीक है. फिर फोल्डर की बात हुई, तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि इट्स एन हियर, वो तो फास्ट कि जो ये आंसर है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स है, तो अगर आप एस नहीं लगाते तो आपका आंसर रॉन्ग होएगा. अब जो आज की डेट में लिसनिंग है उसमें एस ई एस, 2 वर्ड्स 1 वर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं. तो डोंट प्ले विद दीज थिंग्स. अगर आप सपोज करो ग्रैंड पेरेंट लिख के आ गए तो आपका आंसर रॉन्ग होएगा. ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है. फिर आगे क्या है, उसने कहा कंट्रास्ट और कलर मेल ने कह दिया, तो कलर हमारा जो है बिल्कुल ठीक आंसर है. उसके बाद उसने कहा कि जो फजाइल होंगी मतलब कि बहुत ओल्ड फोटोज़ हैं जैसे, तो वो कहता है कि उसने मेल ने आंसर दे दिया कि हैंड के थ्रू हैं. यहाँ तक हम चलें. अब उसने कहा कि अगर तुमने कुछ रिमूव करना है, चेंज की जगह यहाँ उसने वर्ड यूज़ किया ऑल्टर, तो बैकग्राउंड उसने यूज़ कर लिया. अब उसने कहा कि जिसकी लेडी ने कहा कि फोकस नहीं है, वो कहता हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में. उसने ये नहीं कहा कि फोकस है, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज़ किया था इन अप्रोप्रिएटली,
राइट। तो ये वर्ड जो यूज़ किया है, तो ये वर्ड मतलब कि इसलिए यूज़ किया है जिसका मतलब नॉट करेक्टली है, ठीक है। तो उसके बाद फोकस बोल रही है लेडी। ऑर्डर को उन्होंने कहा 10 डेज में, तो यहाँ मैंने 10 लिखा नंबर, डेज लिखा वर्ड। तो उन्होंने क्या ही रखा है कि आपने नंबर एंड वर्ड लिखना है, तो मैंने लिख दिया। फिर उसने कहा कि प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, वो भी हमने चलो वही कार्ड बॉक्स उसने कहा था कार्डबोर्ड में भेज दो कि वो ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक हो जाए। तो ये थी मेरी सारी इसकी वर्क, जिसके आंसर्स बिल्कुल आपके सामने हैं। मतलब हमने टाइम पे चले, अंडरलाइन भी करा जितना हम कर सकते हैं, सारा तो नहीं वर्कआउट कर सकते हम लोग, साथ साथ में चलते रहे। मतलब हमने अपना पेन जो चलो आपने तो पेंसिल यूज़ करनी है या ऑनलाइन चलेंगे, मतलब ये कंसंट्रेशन की बात है कि ये लोग आप हटा नहीं सकते यहाँ से। अगर आपने कंसंट्रेशन ब्रेक करी तो नेचुरली आप लूज़ करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि इसका मतलब हमें दोनों के ऊपर ध्यान देना है। 2 मेंबर्स हैं, 2 स्पीकर्स हैं, दोनों की कन्वर्सेशंस के ऊपर ध्यान देना है हमने। रिमेंबर वन थिंग। सो दैट्स ऑल इन दिस वन। और आप देख रहे हैं प्रविंदर रंधावा गुरु यूट्यूब चैनल। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स बटन को टच कीजिए, बिकॉज दिस इज़ ये सबसे अलग चैनल है, ये भी आप समझते हो। ये इसकी इस चैनल में जो भी वीडियो आती है वो एक क्लास रिप्रेजेंट करती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ आपको। थैंक यू प्लीज़।